Hello students, welcome to my video lecture. First Brahmanath. Om Shanti Shanti Shanti. In last class we discussed compound angles, submultiple angles, multiple angles, problems of sum and product rule, and problems of also maximum and minimum value. Next, problems of conditional identity. Today we are going to discuss trigonometric equation. Trigonometric equation. Okay, an equation which involves one or more trigonometric functions of unknown angle is known as trigonometric equation. Okay, the trigonometric equation. An equation involves which involves an equation which involves one or more trigonometric functions of unknown angle is called trigonometric equation. For example, sin theta is equal to half to cos 2 theta plus cos theta is equal to 0. These are the examples of trigonometric equations. Next, solution. The solution of a trigonometric equations or the value of unknown angle satisfy the trigonometric equation is known as solution of the equation. Okay, the value of the unknown angle, the value of the unknown angle satisfies the given trigonometric equation equations are known as solution of that trigonometric equations. Okay, there are two types of solutions. There are two types of solutions.
One is principal solution. Second one is general solution. First one is principal solutions, second one is general solutions. So first principal solution. The solution of the trigonometric equation lies on 0 to 2 pi. Both 0 and 2 pi are included. 0 to 2 pi. The solution of the trigonometric equations lies on 0 to 2 pi are known as principal solution. Principal solutions. Okay. Example, sin theta is equal to half. So this implies theta is equal to pi by 2 and theta is equal to pi by 6 and 5 pi by 6. Both are belongs to 0 to 2 pi. So these are called principal solution. Pi by 6 and 5 pi by 6. Okay. And second one what? General solution. Second one gonna general solution. Acha. In principal solution, we get finite number of solution. Finite number of solution. Because restriction is there, 0 to 2 pi. 0 to 2 pi means restriction. So in this case we get finite number of solutions. Okay. Next, general solution. The solution lies entire real number R. The solution of the trigonometric equation lies on entire real number R. Okay. So in this case we get infinite number of solution. Okay. Infinite number of solutions. Okay. Example, sin theta is equal to 0. So theta is equal to what? 0 degree plus or minus pi, comma plus or minus 2 pi, comma plus or minus 3 pi up to dot. So theta is equal to what? Now theta is equal to n pi. N belongs to z. So in this case we get infinite number of solution. Okay. But principal sin theta is equal to 0, find the principal solution.
तो देर आर 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. 1 sin theta equal 0 means theta 0, pi and 2 pi. So 0, pi, 2 pi are the principal solution of sin theta is equal to 0. Whereas sin theta is equal to 0, then their general solution are n theta is equal to n pi. That means n belongs to integer z. Okay. Some important formula. Some important formulae. Some important general solution. General. 1. You remember this formulae. 1 sin theta is equal to 0 implies theta is equal to n pi, n belongs to z. 2 cos theta is equal to 0, so implies theta is equal to 2n plus 1 pi by 2, same n belongs to z. 3 tan theta is equal to 0 implies theta is equal to n pi, n belongs to z. 4 cot theta is equal to 0 implies theta is equal to 2n plus 1 pi by 2, comma n belongs to z. 5 sec theta never 0, cosec theta never 0. 5 sin theta is equal to 1 implies theta is equal to 2n pi plus pi by 2 is equal to 4n plus 1 pi by 2, n belongs to z. 6 sin theta is equal to minus 1 implies theta is equal to 4n minus 1 pi by 2, n belongs to z. 7 cos theta is equal to 1 implies theta is equal to even pi, n belongs to z. 8 cos theta is equal to minus 1 implies theta is equal to odd pi, n belongs to z. 9 tan theta is equal to 1 implies theta is equal to n pi plus pi by 4, comma n belongs to z. अब प्लस और माइनस 1 नहीं जोड़ेगा, प्लस और माइनस 1, तो ये प्लस और माइनस मीन्स प्लस 1, तो टेकिंग tan theta is equal to plus 1, theta is equal to n pi plus pi by 4, tan theta is equal to minus 1, theta is equal to n pi minus pi by 4. ओके, तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस. ओके, नेक्स्ट 10 sin theta is equal to sin alpha is equal to sin alpha implies theta is equal to minus 1 to power n into alpha plus n pi, n belongs to z. ओके, तो अल्फा कौन ना माइनस पाई बाई 2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाई 2 और इक्वल ना चलो. नेक्स्ट 11 cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus or minus alpha, तो अल्फा बिलोंग्स टू 0 लेस देन इज इक्वल टू अल्फा लेस देन इज इक्वल टू पाई, 0 लेस देन इक्वल अल्फा लेस देन इज इक्वल टू पाई. ओके, नेक्स्ट 12 tan theta is equal to tan alpha, तो implies theta is equal to n pi plus alpha, n belongs to z, alpha belongs to minus pi by 2 less than alpha less than pi by 2, open interval. ओके, तो cosec theta is equal to cosec alpha means same as sin theta equal to sin alpha. cot sec theta is equal to sec alpha means cos theta equal to cos alpha नबा. tan theta cot theta equal to cot alpha means tan theta equal to कौन नबा tan alpha form. नेक्स्ट 13 sin square theta
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा इन ऑल इन थ्री केसेस। ये जो तीन जा केस कौन हम थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू व्हाट जेड। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। ओके, तो बर्तमान गोटे गोटे प्रूव करिया है। तो एतिकी फार्मूला टोटली 13 फार्मूला आर देयर। तो बाय हार्ट दिस फार्मूला है नहीं एंड डू द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज। तो फास्ट आम कौन बर्तमान करवा ना गोटे गोटे फार्मूला प्रूफ करवा गोटे दिन है। तो फर्स्ट वन प्रूफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ ट्राइंगल, सॉरी दिस इज x axis, this is y axis origin. So this is a point P join, this is OPM is right angle triangle and right angle at M. Okay, तो sin theta, this is theta, तो sin theta is equal to what PM by OP. ओके, अच्छा तो if sin theta is equal to 0 then PM by OP is equal to 0, that implies PM is equal to 0. So this implies OP coincide with, it is length 0, OP coincide with OX or OX dash, means OP 0 हो पारे और थीटा जो 180 डिग्री है अधिक कौन हम इफ थीटा इज 180 डिग्री OP आल्सो कोइंसाइड विथ नेगेटिव x एक्सिस। ओके, तो PM इज 0, OP कोइंसाइड विथ पॉजिटिव x एक्सिस और OP कोइंसाइड विथ कौन नेगेटिव x एक्सिस। ओके, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल व्हाट 0 हो पारिबो किंबा प्लस और माइनस पाई किंबा प्लस और माइनस 2 पाई किंबा प्लस और माइनस 3 पाई डॉट डॉट डॉट। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 implies थीटा इज इक्वल टू इंटीजर पाई n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू व्हाट z। सिमिलरली टू cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा मीन्स व्हाट OM बाई OP, OM बाई OP इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज OM इज इक्वल टू 0, OM इज इक्वल टू 0 मीन्स OP कोइंसाइड विथ कौन आसो OP कोइंसाइड विथ OY और OY डैश। OP टा कोइंसाइड का तो OY सहित ना कौन हम OY डैश सहित ना नहीं। तो दिस इम्प्लाइज OY मीन्स ये एंगल के दिस एंगल पाई बाई 2, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस पाई बाई 2। जदि एमती गला ये गला तो ये पाई बाई 2, एपटे आसला कौन हम ये माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और प्लस और माइनस 3 पाई बाई 2 और प्लस और माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस और माइनस 7 पाई बाई 2 डॉट डॉट। दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, दीज आर द ऑड नंबर्स, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो n बिलोंग्स टू व्हाट z, n बिलोंग्स टू z। ओके, OP line if OM is equal to 0 then OP line coincide with positive y axis और OP line coincide with कौन नेगेटिव y axis है कि ताले कौन हम तो पॉजिटिव y axis मीन्स पाई बाई 2, नेगेटिव y axis मीन्स कौन माइनस पाई बाई 2 और यदि गोटे कौन आसो पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। ओके, तो दिस इज जनरल फॉर्म। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू ऑड पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू व्हाट ऑड पाई बाई 2। ओके, नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल 0 मीन्स tan थीटा इज व्हाट sin थीटा बाई cos थीटा, देयरफॉर sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज sin थीटा इज इक्वल 0, तो sin थीटा इक्वल 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू n पाई, हेंस tan थीटा इक्वल 0 मीन्स
sin theta equal to 0, that means theta is equal to n pi. Okay, next sin theta is equal to 1. Next sin theta is equal to 1. Sin theta is equal to 1. Okay, so sin theta is equal to 1 means this is x axis, this is y axis, origin, this is OPM. Okay, this is theta. So sin theta is equal to 1 means theta is कौन हम PM by OP नहीं कि अच्छा, तो sin theta is equal to what? PM by कौन OP is equal to 1. That implies PM is equal to कौन OP. तो PM is equal to OP means PM is equal to OP means theta is pi by 2. Theta means PM is equal to OP. ये लेंथ कितना हो? अच्छा, P we have OM square plus PM square is equal to OP square. अच्छा, as PM is equal to OP, so this implies OM square is equal to 0. That implies OM is equal to 0 means a angle 0. A angle 0 means एटा कौन हम? एटा आसिक 80 मिसियो ना नहीं, तो एंगल कितना हो? 9 डिग्री. So that implies theta is what? Pi by 2. तो theta is pi by 2 means positive y axis पर sin theta is कौन 1. That implies sin theta is equal to 1 implies theta is pi by 2. Theta is equal to 1 implies theta is equal to pi by 2. Again गोटे सर्कल बुल्ला पर जगह 1 हम नहीं कहल, यही जगह पहुँचले तुम साइनटा कौन हम 1. ऑन पॉजिटिव y एक्सिस sin theta is 1. On positive y axis sin theta is equal to कौन 1. तो positive y axis means what? तो sin theta is equal to 1. This implies theta is equal to 2n pi plus pi by 2 means the whole. This is pi by 2. यही जगह पहुँचापी एगेन गोटे सर्कल बुला ना कहल, ये कौन 2 पाई. आउ थे पहुँचापी आउ गोटे सर्कल बुलिया पड़ा, आउ थे 2 पाई आड कल, एगेन आउ गोटे सर्कल बुलिया पड़ा तो 4 पाई आड कल. तार कौन हम पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, पाई बाई 2 प्लस 4 पाई, पाई बाई 2 प्लस 6 पाई डॉट डॉट. दैट मीन्स पाई बाई 2 प्लस 2n पाई इवेन पाई. तो पाई बाई 2 प्लस इवेन पाई. तो टी सिंप्लीफाई कले एलसीएम बाहर करदे, दिस इज 4n प्लस 1 पाई बाई 2. ओके, तो दिस इम्प्लाइज sin theta is equal to 1 implies theta is equal to 4n plus 1 pi by 2. n belongs to z. तो on positive y axis sin theta is 1. On positive y axis sin theta is 1. Similarly on negative y axis, on negative y axis sin theta is equal to -1. Sin theta is equal to -1. तो implies this is minus pi by 2. तो sin of minus pi by 2, sin of minus pi by 2. तो implies theta is equal to 2n pi minus pi by 2. That means 4n minus 1 pi by 2. n belongs to z. n belongs to कौन z. Okay. Similarly cos theta is equal to 1. Cos theta is equal to 1 means this is what? Sin square theta plus cos square theta equal to 0 और cos theta is equal to 1. तो cos theta is equal to 1 means, so you can cos theta is equal to sin of 90 minus theta. Okay, is equal to 1. तो implies pi by, तो sin of theta is equal to 1. Sin of theta is equal to 1 means theta is equal to 4n plus 1 pi by 2. तो implies pi by 2 minus theta is equal to 4n plus 1 pi by 2. Okay, और pi by 2 minus theta is equal to this is 4n pi plus pi by 2. और we can take also this is pi by 2 plus theta also.
sin pi by 2 plus theta. So you may take the plus also kind sin 90 plus theta equal cos theta na. So this implies pi by 2 cancel. So theta is equal to 4n pi. Theta is equal to what? 4n sorry this is 4n pi by 2 plus pi by 2. So this is 2n pi by 2 cancel. This is 2n pi. N belongs to z. N belongs to what? Z. So cos theta is equal to 1 means sin pi by 2 plus theta is equal to 1. So pi by 2 plus theta is equal to 4n plus 1 pi by 2. A formula answer is sin theta is equal to 1. Sin theta is equal to 1. Theta is equal to 4n plus 1 pi by 2. Okay. So on positive x-axis cos is 1. On positive x-axis cos theta is equal to 1. Similarly on negative x-axis cos theta is equal to minus 1. When the on negative x-axis means theta is odd pi by 2. So this implies theta is 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi. N belongs to z. This is 0. So it is cost negative. A jagare cost negative. It cost positive. It cos 2n pi is equal to 1. It cos 2n plus 1 pi is equal to minus 1. A jagare cost सबले minus 1. A jagare सबले cost कौन plus 1. Okay. On positive x-axis रे cost plus 1. On negative x-axis रे cost कौन minus 1. Okay. Next to prove sin theta is equal to sin alpha नहीं. Next to prove sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to minus 1 n into alpha plus n pi. N belongs to z. N belongs to z. Okay. So proof given sin theta is equal to sin alpha. So implies sin theta minus sin alpha is equal to 0. So use sin c minus sin d formula. So use sin c minus sin d. So 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 0. So implies x into y is equal to 0 means either x is equal to 0 or y is equal to 0. So this implies cos theta plus alpha by 2 is equal to 0 or sin theta minus alpha by 2 is equal to 0. So implies cos theta is equal to 0 means theta is odd pi by 2. Cos theta is equal to 0 means theta is equal to odd pi by 2. 2n plus 1 pi by 2. Okay. यही फॉर्मूला पड़ला cos theta is equal to 0. So theta is equal to 2n plus 1 pi by 2. Okay. N belongs to z. It is sin theta is equal to 0 means theta minus alpha by 2 is equal to n pi. N belongs to z. So 2 to 2 cancel. So theta plus alpha is equal to 2n plus 1 pi. Here theta minus alpha is equal to corresponding कर देले 2n pi. तो 2n pi is even. 2n plus 1 pi is odd. 2n pi कौन even. एटा कौन आमर odd. Okay. So this implies theta is equal to 2n plus 1 pi minus alpha. Or this is theta is equal to 2n pi plus alpha. In both cases n belongs to what? Z. N belongs to Z. Okay. For n is equal to 0. The theta is equal to हमें कौन पाइले 2n pi plus alpha. N belongs to Z. N is equal to 0. Theta is equal to alpha. N is equal to 1. Theta is equal to 2 pi plus alpha. N is equal to 2. Theta is equal to 4 pi plus alpha. N is equal to 3. Theta is equal to 6 pi plus alpha. Dot dot. Next, when theta is equal to 2n plus 1 pi minus alpha, n is equal to 0.
थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, एन इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस अल्फा, एन इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई माइनस अल्फा, एन इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई माइनस अल्फा डॉट डॉट। ये और देखो और मीन्स कौन यूनियन, तो एतक यूनियन एति करी हमें नहीं कि। अच्छा तो combining both we get देखो 0 प्लस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा 6 पाई प्लस अल्फा मीन कौन इभेन पाई, तो इभेन पाई दिस इज अल्फा तो 0 पाई प्लस अल्फा मीन्स 0 2 4 6 दिज आर इभेन नंबर, जो इभेन नंबर थिला बेलू ये प्लस आस देख सब प्लस। ये कौन है 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ये कौन ऑड नंबर, जो ऑड नंबर लगुच ये कौन आस माइनस आस, तो ऑड थिला बेलू माइनस आस, इभेन थिला कौन आस प्लस आस। तो कंबाइनिंग बोथ करिया हमें, कंबाइनिंग बोथ हेले कौन आसीबो इन जनरल थीटा इज इक्वल टू -1 टू पावर n इंटू अल्फा प्लस n पाई n बिलोंग्स टू z। देखा तो when n is even थीटा इज इक्वल टू कौन हम -1 रे इभेन, -1 रे इभेन मीन्स प्लस अल्फा, तो प्लस अल्फा एन टा कौन इभेन, तो इभेन पाई ऐसे कौन इभेन पाई 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई इभेन पाई। when n is even this is प्लस अल्फा इटा प्लस इभेन पाई जाए। when n is odd this is माइनस अल्फा इटा ऑड पाई, n is odd तो इट इज ऑड पाई 1 3 5 7 मीन्स एन जार 0 पकेले फास्ट पाइब, एन जार 1 पकेले एथर फास्ट पाइब, एन जार 2 पकेले ऊपरटा पाइब, एन जार 3 पकेले एथर सेकेंड पाइल एंड सो ऑन। ओके तो कंबाइनिंग बोथ वी गेट थीटा इज इक्वल टू -1 n इंटू अल्फा प्लस n पाई। तो रिमेंबर दिस फार्मूला sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू -1 n इंटू अल्फा प्लस n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू z। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा कहला, तो अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट, अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। एटा प्रूव करा ठीक ना नहीं। नाउ sin अल्फा इज इक्वल टू k, sin अल्फा इज इक्वल टू व्हाट k। ओके देयरफॉर k lies between -1 to +1, k lies between what, because sin अल्फा इज k तो k lies between -1 to +1। ओके तो this implies -π/2 लेस देन और इक्वल टू, और -1 लेस देन इज इक्वल टू sin अल्फा लेस देन इज इक्वल टू कौन 1। ओके तो इम्प्लाइज -π/2 लेस देन इज इक्वल टू, और -1 मीन sin ऑफ -π/2 लेस देन इज इक्वल टू sin अल्फा लेस देन इज इक्वल टू sin π/2। तो दिस इम्प्लाइज -π/2 लेस देन इज इक्वल टू अल्फा लेस देन इज इक्वल टू π/2। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, देन अल्फा लाइज बिटवीन व्हाट -π/2 टू +π/2, -π/2 टू +π/2। ओके नेक्स्ट टू प्रूव cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, नेक्स्ट टू प्रूव cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। प्रूफ गिवन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यूज cos c माइनस cos d फार्मूला। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos c माइनस cos d ना 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, और -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ओके तो ठीक अच्छे, दिस इज -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2।
Okay, so this implies sin theta plus alpha by 2 is equal to 0 or sin theta minus alpha by 2 is equal to 0. तो sin theta is equal to 0 means theta is equal to n pi. sin theta is equal to 0 तो theta टा कौन n pi. तो theta plus alpha by 2 is equal to n pi और theta minus alpha by 2 is equal also n pi. n belongs to what? Z. तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई और थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई. तो इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2n पाई माइनस अल्फा और हियर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2n पाई प्लस अल्फा. n बिलोंग्स टू z. तो हियर और गिवन और मीन्स यूनियन. तो यही सॉल्यूशन और यही सॉल्यूशन दुईटा को मैं ऐड करदेबा यूनियन करदेबा. तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई कॉमन 2n पाई कॉमन. तो ये कौन प्लस और माइनस अल्फा. n बिलोंग्स टू z. तो अल्फा कौन ना 0 लेस देन इक्वल अल्फा लेस देन इक्वल कौन पाई. देख टे कौन हियर लेट cos अल्फा इज इक्वल टू k. हियर -1 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू 1. दैट मीन्स -1 लेस देन इक्वल टू cos अल्फा लेस देन इक्वल टू 1. तो cos तो -1 मीन्स दिस इज -1 मीन्स cos ऑफ कौन आसला -1 मीन्स कौन ना cos अल्फा लाइज बिटवीन -1 to 1. तो अल्फा लाइज बिटवीन 0 to पाई बिकॉज cos 0 मीन्स 1 cos पाई मीन्स -1. देयरफॉर अल्फा लाइज बिटवीन कौन आसला 0 to पाई 0 to पाई. तो cos ए डिक्रीजिंग फंक्शन. तो से कौन ना आम अल्फा लाइज बिटवीन 0 to पाई मीन्स ये पाई लिखला हेनी. cos पाई इज लेस देन इज इक्वल टू cos अल्फा लिखिले भी चलो. लिखिए मनकर दिस इम्प्लाइज cos पाई लेस देन इज इक्वल टू cos अल्फा लेस देन इज इक्वल टू cos 0 डिग्री. तो दिस इम्प्लाइज 0 डिग्री लेस देन इज इक्वल टू अल्फा लेस देन इज इक्वल टू पाई. ओके, सिंस cos is decreasing function है. cos is decreasing function on 0 to pi. means angle increases value decreases. ओके, एंगल इनक्रीज हेल्ले भैल्यू कौन हम डिक्रीज हम कौटी इन केस ऑफ cos. तो ये आमर cos. देयरफॉर रिमेंबर द फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा. दिस इज नोन एज जनरल फॉर्मूला. n बिलोंग्स टू z और जनरल सॉल्यूशन कहते है. नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. टू प्रूफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा. n बिलोंग्स टू n पाई प्लस अल्फा. n बिलोंग्स टू z एंड माइनस पाई बाई 2 लेस देन अल्फा लेस देन प्लस पाई बाई 2. ओके, सॉल्यूशन और प्रूफ गिवन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. तो implies tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0. तो tan थीटा मीन sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin अल्फा बाई cos अल्फा इज इक्वल टू 0. तो फाइंड द एलसीएम cos थीटा इंटू cos अल्फा. दिस इज sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा इंटू sin अल्फा इज इक्वल टू 0. तो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b इज इक्वल टू sin ऑफ a माइनस b. तो यूज द फार्मूला sin ऑफ a माइनस b डिवाइड बाई cos थीटा इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू 0. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो. sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0. तो sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई. n बिलोंग्स टू z. sin थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू n पाई. तो इम्प्लाइज व्हाट इज थीटा n पाई प्लस अल्फा
राइट साइड पड़ेगा अल्फाटा तो माइनसटा कौन हम प्लस तो n बिलोंग्स टू z ओके नाउ let tan alpha is equal to k तो tan alpha is equal to k means tan theta is equal to k तो here k lies between minus infinity to plus infinity k lies between minus infinity to plus infinity okay तो this is tan minus pi by 2 tan minus pi by 2 minus infinity less than k less than tan plus pi by 2 tan k means tan alpha so implies minus pi by 2 is less than alpha is less than plus pi by 2 okay therefore tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha comma n belongs to z and minus pi by 2 less than alpha less than plus pi by 2 okay so remember this formula similarly cot theta equal to cot alpha is same as tan theta is equal to tan alpha cot theta equal to cot alpha means theta equal to same n pi plus alpha sec theta equal to sec alpha is same as cos theta is equal to cos alpha that means theta is equal to 2n pi plus or minus alpha cosec theta is equal to cosec alpha is same as sin theta is equal to sin alpha that is theta is equal to minus 1 to power n into alpha plus n pi in all cases n belongs to set of integer z okay next to prove sin square theta is equal to sin square alpha to prove sin square theta is equal to sin square alpha implies theta is equal to n pi plus or minus alpha n belongs to z okay तो अल्फाटा साइन केस रे माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल कॉस केस रे 0 टू पाई क्लोज इंटरवल tan केस रे ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू कौन प्लस पाई बाई टू तो प्रूफ गिवन sin square theta is equal to sin square alpha so this implies sin square theta minus sin square alpha is equal to 0 तो sin square a minus sin square b use the formula sin square a minus sin square b तो sin square a minus sin square b means sin of a plus b into sin of a minus b okay तो implies sin theta plus alpha is equal to 0 और sin theta minus alpha is equal to 0 तो implies theta plus alpha is equal to n pi और theta minus alpha is equal to n pi in both cases sin 0 तो theta plus alpha is equal to n pi और theta minus alpha is equal to n pi n belongs to what z तो theta is equal to what n pi minus alpha और theta is equal to n pi plus alpha okay combining both we get theta is equal to n pi plus or minus alpha n belongs to z because n pi is common okay n pi कौन अच्छी कॉमन अच्छी तो अल्फा एंड माइनस अल्फा डिफरेंट अच्छी तो कंबाइन करवा आम कौन पाइबा n pi प्लस और माइनस अल्फा n pi प्लस और माइनस कौन आसो अल्फा आसो बोले n belongs to z सिमिलरली cos square theta equal to cos square alpha सेम फॉर्मूला पकेबो cos square theta minus cos square alpha equal to 0 तो यूज cos square a minus cos square b फॉर्मूला तो it becomes cos a plus b into sin cos a plus b cos square theta minus cos square alpha equal to 0 that implies sin square alpha minus sin square theta is equal to 0 that implies sin alpha plus theta is equal to 0 into sin alpha minus theta is equal to 0 सेम फॉर्मूला ही पकेबो नेक्स्ट tan square theta equal to tan square alpha तो tan टा कौन करिवो sin cos रे कौन करिवो sin cos रे x sin cos रे कन्वर्ट करी एलसीएम बाहर करी करिवो ओके ठीक अच्छी नेक्स्ट क्लास में आम कौन करिया एटा बेस करी प्रॉब्लम किछि करिवा ओके।